myself Vishal Bhatnagar. In our this session, we will be discussing about the data storage. See, in the earlier lectures, we have seen how the data came into existence and how we categorize the data. Naturally, data को रखना तो कहीं पड़ेगा. अगर हमको डेटा को रखना पड़ेगा तो हाउ डू वी कैटेगराइज. सी आफ्टर गोइंग थ्रू मैनी लिटरेचर्स what I concluded it, we talk about the data storage in two terms. The physical, where you see from naked eyes that yes, floppy disk होती है, SSD होती है, हार्ड ड्राइव होती है, फ्लैश मेमोरीज होती हैं. तो एक ये कैटेगराइजेशन है जो हमारा डेटा का है. दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं, सिखाते हैं, समझते हैं, दैट इज़ हाउ दिस डेटा इज बीन स्टोर्ड इन एक्चुअल फॉर्मेट or your software aspects of the data. How can you store the data? Actually, to be very honest, the data will always be stored in which format? Data will be always stored in the form of bits, because digital format है कंप्यूटर में data किस फॉर्म में आएगा, 0 या 1. But the concept is, when you say about 0 and 1, are you going to really discuss about 0 and 1? 0 1 मशीन वाला जो लैंग्वेज है, क्या हमें समझ में आ रही है? नहीं आ रही है. तो हमें वहाँ से उठ के कहाँ तक गए हैं. That is what the important aspect before we analyze the data. So, I have broadly classified these things into two things: physical data storage medium, and the data storage technologies. Why I say technologies? Because this has helped us or helped human beings to be more interactive with the 0 and 1 or more interactive with the hardware rather than the directly physical storage. देखिए, आपको फ्लैश ड्राइव मिलती है, आप उसको तोड़ के नहीं देखते हैं, आप उसके अंदर खंगाल के नहीं देखते हैं. वो एक टेक्नोलॉजी है जो आपको एक फॉर्म में मिल रही है, स्टोरेज के फॉर्म में हार्ड ड्राइव मिलती है, उसमें आपको सिर्फ प्लग एंड प्ले करना होता है, एंड यू स्टार्ट स्टोरिंग द डेटा इनटू दैट. So, I will first of all discuss about what are that plug and play type of data storages which are available to you. See, ये सिंपल उदाहरण पे देखेंगे तो we started with this punch cards where इसका सिंपल, अगर आपको you want to memorize this or you want to understand this thing, you understand the generations of the computer. You might have seen पंच कार्ड वगैरह से शुरू किया था, ICs, सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर्स, देन योर VLSI टेक्नोलॉजीज, देन फॉलोड बाय 4th generation, 5th generation AI based. So, this is what parallel development of the hardware technologies through which we have gone through. आज की डेट की बात करें तो कहाँ खड़े हैं हम? आज की डेट में हम लोग खड़े हैं SSD में, solid state devices. Why are we using this? Because we are using this because there are two advantages which we have got from this. USB फ्लैश जब हम यूज़ करते थे उस ज़माने से हमें एक बहुत अच्छी चीज़ मिली है कि भाई इसको लगाइए और तुरंत आप इसको यूज़ करना शुरू कर दीजिए. यू डोंट रिक्वायर वेस्टेज ऑफ टाइम, यू डोंट रिक्वायर टू वेट फॉर द प्रोसेसिंग टू बी डन और स्टोरिंग द डेटा और रिट्रीविंग द डेटा. सो इन करंट टेक्नोलॉजी व्हाट वी से इज़ वी आर इन ए स्टेज ऑफ SSD सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, जहाँ पे आप इसको एक स्टोरेज टाइप यूज़ कर रहे हैं एज ए फ्लैश. सो आर देयर एडवांटेजेस? व्हाट आर द एडवांटेजेस देन? क्या एडवांटेज है? अगर आप लेके आए हैं कोई नई टेक्नोलॉजी को तो उसका एडवांटेज हो रहा है, डिसएडवांटेज हो रहा है. क्या एडवांटेज हो रहा है, क्या डिसएडवांटेज हो रहा है? एडवांटेज इन द टर्म दैट दिस इज बीन वेरी फास्ट बिकॉज यू आर जस्ट प्लगिंग इन टू द सिस्टम एंड इट्स गोज ऑन, वाइल दैट इज नॉट द केस व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्लियर टेक्नोलॉजीज और द हार्ड ड्राइव. तो इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि आपकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ रही है, फास्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है, आप इसको भी एक हार्ड ड्राइव जैसे यूज़ कर रहे हैं, उससे आपका बूटिंग ऑफ द सिस्टम बहुत जल्दी हो रहा है, प्रोसेसिंग जल्दी हो रही है. बट आर देयर एनी डिफिकल्टीज ऑल्सो एज कम्पेयर टू योर हार्ड ड्राइव? येस, देयर इज़ ए लाइफ ऑफ इट, देयर इज़ ए लाइफ ऑफ इट. जब आप हार्ड ड्राइव की बात करते हैं तो नॉर्मली अगर आप एक कंप्यूटर खरीदते हैं तो दोबारा शिकायत कभी आती नहीं है अगर शुरू कर देते हैं, which is not the case with the SSDs. They have a limit. They have a limit to the amount of read and write which you can perform on this SSD as compared to your hard drive. So, everything has its own pros and everything has its own con. So, these are the technologies which we have which we have seen over the years, which have come into existence, and right now we are standing as a stage of SSD and maybe other technologies which are coming into the market. It depends upon the usage and the importance which is there in your life you want to use it. Now, coming to the very important thing, that is the data storage technologies. As I said, we started our discussion and we know who are very well habitual or more accustomed to our computer that with the very first class it has been said the data is stored in the form of digital format 0 and 1.
when we say that data is being stored in the form of 0 and 1, then very important thing comes into picture is क्या 0 और 1 हमें समझना पड़ेगा कि क्या मतलब है. जैसे if I write let's say xyz, so is it not going to store in a storage in the form of xyz? No, you know it is not going to be stored in the form of xyz, it is going to be stored in the form of something like this. So if I have to analyze this data, तो पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा और आपके दिमाग में आएगा कि भैया अगर एनालाइज इस तरह के डेटा को करना है, let's better not to analyze the data because it is going to be very complex. Because for xyz I am writing this, imagine a situation where we are having terabytes, petabytes, zettabytes of data. In that case analyzing in this manner will be a very difficult task. So naturally धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ा है. कहाँ से बढ़ा? सबसे पहले 0 1 को हमने कन्वर्ट किया. We used to store in the form of 0 and 1, but the illusion or the as from the user's perspective we see it in a form of a file, where we say we have a defined file. जैसे आप सिंपल है वर्ड में खोलते हैं तो एक फाइल खुल जाती है आपकी. अब ये फाइल में आप जो भी लिखते हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं, वो आपको लगता है इस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, बट द फैक्ट इट इज अगेन स्टोर्ड इन द फॉर्म विच इज इक्वलेंट टू दिस, but you are able to see this form. So there is an interface between these two which has to be taken care by the system, not you. So what you say is, in this terminology, what very important aspect is that when we talk about a file, the important aspect, what are the important aspect? जैसे हम लोग वर्ड में बनाते हैं तो सबसे पहले important क्या है? उस फाइल का नाम देना पड़ता है. That is nothing but opening the file or naming of that file and opening that file, then followed by the reading of the file, particular writing of the file if you want to write on that, and then when you go out of that file you have to close that file so that you can next time open a second file, third file, fourth file, again you can open the same file. So what actually is required in the case of file is that you have to go through the again and again opening, closing, reading and writing of the file, which is much better than the 0 1 digital format, but still you require certain intervention, you require certain more manual aspect जहाँ पे आपको थोड़ी सी और मेहनत लग रही है. And the technology next came into existence was the database, where the user's perspective was very important. You might have gone through in your various subjects that the data abstraction has been provided in the case of database management system, which was not there in the case of your file. That is कि यूज़र को जिस पर्सपेक्टिव में देखना है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में देखना है, अपने समझ की लैंग्वेज पे देखना है, वो चीज़ हमने डेटाबेस में दी, rather than it was available in the form of file. तो क्या फाइल गायब हो गई? नहीं, फाइल गायब नहीं हुई. The database, you go on creating a structure of it. This is the 0 1 format. यहाँ से आया आपका फाइल, एंड देन फाइल के ऊपर आपने बनाया है डेटाबेस, ऑल्सो कॉल्ड एज रिपोजिटरी. यहाँ पे आपने डेटा को इस सिस्टमाइज्ड तरीके से रखने की कोशिश की है, जो सिस्टमाइज को आप समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं. दैट इज अनदर टेक्नोलॉजी विच वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज कॉल्ड RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. एक फॉर्मेट है, मॉडल है, जिसके थ्रू आप डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं. मैनी टेबल्स आर देयर, दे मे बी लिंक्ड विद ईच अदर, दे मे नॉट बी लिंक्ड विद ईच अदर. So this is the another technology which we have created. So what is the important aspect about the database? How it is different from the file? The very important aspect is data abstraction. The data abstraction has been provided where the user is able to see the things according to his own needs, according to his work. He is able to see the things in his own easily understandable fact. The second important thing is you keep the database whatever the things which are current of usage, like the database, in the database of our university we will try to keep the information about the students who are currently going through the courses. They may be any type of courses, but they may be right now pursuing their courses. So that is what the current data is. We will put the data in such a crisp form that is much more easily you can say manipulable, or you can manipulate, or you can change the data according to your own desire. It will be free of any kind of anomalies. You might have gone through this word in your database management system. It will be free of all the anomalies like डबल हो जाना डेटा का, डेटा की दो वैल्यू दिखाई देना, ये सारी चीज़ों को एनोमलीज कहते हैं, जिसमें इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड रिडंडेंसी आती है. दिस वी विल ट्राई टू रिमूव, एंड वी डोंट ट्राई, वी हैव टू रिमूव इट इन द केस ऑफ
database management system. The data is more structured in a tabular form. So, this is the way we go on in the case of our database. So, उसके बाद की क्या ज़रूरत पड़ी, आगे भी टेक्नोलॉजीज हमारी लिखी हुई है, दैट इज़ नथिंग बट द डेटा वेयर हाउस. सो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डेटाबेस. So, when we talk about the data warehouse, here the perspective of putting the data into a particular repository, which here was the database, here we are discussing about the data warehouse, again a repository. Here the matter changes. Here the question does not lie. Take an example of your university. एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट का डेटाबेस बनाना और उस डेटाबेस में से हमें ये करना कि भाई आगे कौन सा नया कोर्स शुरू करना है. उसके लिए आपका डेटाबेस के जो नॉर्मल डेटाबेस था उसमें से हर एट्रीब्यूट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपका लेट्स से कि दिस इज़ द डेटा, दिस इज़ द टेबल विच यू आर हैविंग of your database. Now, what the information I want according to my subject is what new courses should I have, what new should I need to increase the intake of my this students this branch or not. So, this has to be decided on certain attributes. जहाँ से यहाँ पे 10 attributes हैं, हमें सारे attributes नहीं लेने पड़ेंगे. कुछ एट्रीब्यूट हैं जो हमारे सब्जेक्ट से कंसर्न है. सब्जेक्ट क्या है, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया अभी, उस सब्जेक्ट से कंसर्न है, तो उस सब्जेक्ट्स के डेटा को निकालेंगे. अब इसमें क्या हो रहा है, डेटाबेस में आप करंट डेटा रख रहे थे जो अभी चल रहे हैं. अब ये कि इनटेक बढ़ानी है, घटानी है या नया ब्रांचेस खोलना है, दिस आर द सर्टन क्वेश्चंस विच रिक्वायर योर आर्काइव डेटा ऑल्सो. नो, व्हाट इज एन आर्काइव डेटा? आर्काइव डेटा इज डेटा विच वॉज देयर एट द in the past, which has no current significance, but it has certain significance, because to find out what we need to do in the future, we need to have the present data and the past data. So, in that case, in the case of data warehouse, we require that archive data also, which we do not require in the case of our database, where we do general processing, online transaction processing, such kind of activities. So, that is what the subjective difference, that the data should be subjective, data should be summarized, data should be data may be more complex. Basically, it can be unstructured also, as we have discussed in our earlier what is the structured unstructured difference. So, that is what the data warehouse, where bulk amount of data is being kept, and here the queries which are being fired are more complex as compared to what we do in the case of database. So, this is a broad differentiation. So, how this, again another important aspect which I would like to discuss was data lake, how this is different, how did this came into picture. You might not have heard about this word. So, how it is coming into picture. So, let us go to the another side, then you will come to know about the basic difference between these two. See, in the case of data warehouse, as we state, the data seems to be more on the aspect of that the subject is there and we are trying to process the data. When we talk about processing the data, the very important aspect is we try to keep the data in a repository. We take the data from n number of databases and we try to keep in a repository. So, once we keep on the data here, then we try to analyze here, which is the case that we have predefined data and we can analyze out of it only. That is what the difference which we have created in the case of data lake. Here we do not have the schema on write. This which we have discussed is called as a schema on write, where we already have the data and we are going to analyze it. While in the case of schema on read, we do not put the data unless and until we find that that is important and is usable. So, here the here important aspect comes into picture is that first of all, when the database is there, we try to use that database from n number of sources, and on unless and until we keep that data into the data warehouse or data lake, unless and until we have that important information, that is whether we require more information, less information, or that same information. So, are you able to understand that the difference between schema on data lake and data warehouse depends upon the very important aspect, that whether we are using schema on read or we are using schema on write. In the case of schema on write, we have a predefined data warehouse where we have to do the analysis, while in the case of schema on read, we have a flexibility, we have the whole data and we can choose the data on air, which is very different. Still it is in a maturing stage. While it has been matured, we have been using the data data warehouse for so long now. So, these are the broad differences which I have stated here between the data warehouse and the data lake. Another important aspect
which was there in our slide was the cloud storage. Now, how this is different from all the things which we have discussed here? The important difference between all the four which has been discussed and the cloud storage is that when we talk about the repository is going to be either data warehouse or database or the data lake, but the important thing is here we are not talking about our own setup or our own environment. Here the processing goes and the places where we are going to store the data goes on the basis of distributed database technology. That is, we are going to distribute the data according to the distributed database criteria, which says the data can be replicated at n number of places, data may be fragmented at n number of places, and very important property which it is having is nothing but called as the transparency, that still you have an illusion when you analyze the data that you are using your own system and you are not using other system. The very important distributed database का सिंपल उदाहरण अगर आप देखेंगे जिसका क्लाउड से कोई मतलब नहीं है लेकिन है इंडियन रेलवेज, you see the IRCTC website, it is having the cloud store, it is having the distributed database. Amazon store their data in a cloud. Cloud goes for a distributed database technology where we are using fragmentation, replication, transparency and other concepts which are applicable for the storage of data. So, this is a wider perspective of these things. We started with the files and naturally before that we have the 0 and 1 format on the basis of which we go on using. This we have already discussed. Now, coming to the data measurement, this is what important when we talk about our database, we normally talk about maximum to this angle. When we talk about data warehouse, we go for this angles, and when we talk about the big data, another important technology you might have heard. Why you might be surprised to know that why I have not discussed this storage. This is one of the storage, but I strongly believe at the end of the day the storage technology will not differ. The extraction methodology will difference, and this may be broad or less coming into our cloud storage only, where we will be keeping our data into n number of systems which are distributed in nature. So, from there onwards we will go for the big data technology or cloud storage type of technology. This is other things are very well known to you. We have already discussed about data, how data storage is being done. Now, it is very important that we should know the importance of the data and how to acquire that data or how to gather that information. Unless and until we have the methodology to extract the data or gather the data, we will not be able to process it or we will not be able to put into a storage जिसकी हम अभी बात कर चुके हैं पीछे. So, it is very important that first of all understand the significance, why do we want to go for the data. The important thing about the data is that we are able to make better decisions if we have the data. Why we are able to make the better decisions? Because इंसान में एक फितरत होती है, इंसान हर चीज़ को याद करके नहीं रख सकता. हम जब कंप्यूटर में उठा के डेटा को डाल देते हैं एंड इट हैज़ बीन ओवर द ईयर्स वी हैव बीन कलेक्टिंग द डेटा, देन व्हेन यू वांट टू एनालाइज द डेटा यू हैव दैट होल थिंग इन योर डेटाबेस एज ए सॉर्ट ऑफ मेमोरी. जो इंसान अपने दिमाग में कुछ इवेंट्स को ही रखता है, अपनी जन्म से लेके अभी तक देखेंगे तो कुछ प्रीडोमिनेटली इवेंट्स जिसके आप दिमाग को टच किया होगा या बहुत ज़्यादा हिला के रखा होगा आपको, वो चीज़ें आपको याद रहती हैं. वाइल दिस इज नॉट द केस विद द कंप्यूटर. इफ़ यू स्टोर द डेटा एंड यू वांट टू यूज फॉर फर्दर डिसीजंस मेकिंग, then on the basis of the past archive data which we have already discussed, what is an archive data, current data, archive data, you can use that data to make a better decision for your business, for your betterment of life. Second is it is help to solve the complex problem. How it is able to solve the complex problem? See, take an example of a complex problem which we come across when we study many subjects like traveling salesman problem. What is a traveling salesman problem? Traveling salesman problem says that if a person has to travel to n number of places, then the best solution which he can have, that is the best. Why I say best solution, not the exact solution for going to the n number of places and then completing his work. जैसे एक पिज़्ज़ा हट डिलीवरी वाला बंदा है, अब वो जो सेल्समैन है वो अगर 4 जगह जाएगा तो पहले कहाँ डिलीवर करे, फिर सेकंड कहाँ डिलीवर करे, थर्ड कहाँ डिलीवर करे. दिस हैज़ नो एग्जैक्ट सोल्यूशन अवेलेबल.
वी वॉन्ट टू हैव द बेस्ट सोल्यूशन अवेलेबल, बेस्ट सोल्यूशन फॉर द सेम. सो जहाँ पे प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जहाँ का एग्जैक्ट सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ वी ट्राई टू हैव द डेटा immense in amount stored in the computer, so that while we analyze that data, we come across the various complex problems. It can be easily solved using our data. How it is being solved, that is our future endeavor, which we are going to see in our slides. How it helps to visualize and analyze the data, help to visualize and analyze the performance and the data. How do you say it help us to visualize? See, दो तरीके होते हैं. हमने देखा कि एक टाइम था जब हम नोटपैड बनाते हैं, नोटपैड पे कोई टाइप करिए और किसी को दे दीजिए. दूसरा होता है आप पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाइए जो मैंने बनाई हुई है और उस तरह से आप डेटा को दिखाइए. तो कोई भी चीज़ जो पीपीटी आप बोलेंगे नेचुरली जो पीपीटी फॉर्म में है वो ज़्यादा मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू वी आर हैविंग इन द फॉर्म ऑफ टेक्सुअल डॉक्यूमेंट और इन द फॉर्म ऑफ वर्ड फाइल. वाई? बिकॉज जो वर्ड फाइल में है वो आपको पढ़ना पड़ेगा एक एक करके, जबकि टेक्स्ट फॉर्मेट में जो आपका जो पीपीटी फॉर्मेट में होता है इट इज़ मच मोर इजीली अंडरस्टैंडेबल एज कम्पेयर टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द text file. So this is what the important difference it is when you ask somebody to visualize or you ask a computer to present a visualization which is very important for you. For example, किसी भी चीज़ को एक सिंपल डेटा के फॉर्म में देना और एक ग्राफ के फॉर्म में देना, दोनों में फ़र्क क्या है कि ग्राफिकल चीज़ें आपको दिखाती है कि बढ़ रही है, घट रही है, इंपॉर्टेंट है, नॉट इम्पॉर्टेंट है, स्टैगनेंट रह रही है, सेम रह रही है. सो दैट इज़ वॉट द डिफरेंस विच यू गेट व्हेन यू यूज द डेटा and you analyze that data and come up with the answer which is been presented in a visual form so that you can analyze कि पहले कैसा था अभी कैसा है. फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट के टर्म्स में बात करें तो स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर में परफॉर्मेंस क्या था उसको हम अगर हम प्लॉट करें यहाँ पे, सेकंड ईयर का परफॉर्मेंस कैसा था उसको प्लॉट करें, थर्ड ईयर का परफॉर्मेंस कैसा है उसको प्लॉट करें, तो नेचुरली यू विल कम टू नो कि आपकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है या घट रही है. वाइल अगर उसको मैं एक टेबुलर फॉर्म में दूंगा तो आप बोलेंगे बड़ा मुश्किल है इसको समझना कि बढ़ रही है कि घट रही है. अगर आप मीन भी निकालते हैं तब भी नहीं पता चलता है कि बढ़ रही है कि घट रही है. अनलेस एंड अनटिल यू हैव ए विजुअल फॉर्म ऑफ इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज गोइंग इन एन अप डायरेक्शन और अ डाउन डायरेक्शन एंड व्हाट डू यू एक्चुअली रिक्वायर और you are in a consistent manner. So visualization is another important aspect which comes into picture. It helps to improve the process. How do it helps to improve the process? सी, जब आप कंप्यूटर आया, कंप्यूटर को 1 + 2 = 3 करने के लिए यूज़ किया, देन यू ट्राई टू यूज़ द नॉलेज आउट ऑफ इट, यू ट्राई टू इन्वॉल्व इन द एवरी चेन ऑफ लाइफ और एवरी चेन ऑफ द प्रोसेस इन द इंडस्ट्री. होल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अगर आप यूज़ करते हैं तो नेचुरली जिस प्रोसेसिंग में आपको टाइम लग रहा था, जिस प्रोसेस में आपको एनालिसिस में टाइम लग रहा था, वो एनालिसिस आपका पार्ट कम हो जाता है. For example, you have a division of research, you have a division of marketing. So marketing के दो फंडे होते हैं, एक है कि घर जाके पैम्पलेट बांटिए और अपने प्रचार करिए, दूसरा तरीका होता है आप वेबसाइट पे रखिए, वेबसाइट के थ्रू करिए, ट्विटर के थ्रू करिए, सोशल साइट्स के थ्रू आप प्रचार करिए. सो विच वन इज़ मच बेटर, विच वन इज़ मच ईजियर टू रीच टू द ऑडियंस और द टारगेटेड ऑडियंस और द टारगेटेड कस्टमर्स? It is much easier when you go to the people through the use of the modern technology or use of the modern computer visualization aspect. So this is what the importance of the data is, that it improves the process. Last one is it helps to understand the customers and their preferences. इमेजिन कि आप बिग बाज़ार जा रहे हैं, विशाल मेगा मार्ट जा रहे हैं, अमेज़ॉन में आप शॉपिंग करते हैं, आपका एक बास्केट बनता है जो आप परचेज करते हैं. लेट्स से दैट इज़ अ बास्केट विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ ब्रेड, बटर, A, B, C, D, whatsoever the items which you have purchased. Now from the next time onwards, whenever you come, if I as a owner of that mart is able to understand कि what is your preference, आप जनरली क्या खरीदते हैं, क्या आपका नेचर है, तो आई विल बी एबल टू मच बेटर सर्व यू एंड यू विल बी ऑल्सो ईजली एबल टू अंडरस्टैंड कि वॉट आर माई रिक्वायरमेंट एंड यू विल बी मोर टारगेट ओरिएंटेड एज कम्पेयर टू योर डेटा बीन स्कैटर्ड एंड नो बडी इज बॉदर्ड अबाउट कि पहले क्या परचेज किया था, आगे क्या परचेज करने वाले हैं, इस बार क्या परचेज करने वाले हैं, किसी को कोई चिंता नहीं. तो उस तरह से अगर आप सोचें तो सिस्टमाइज्ड हो गया है, आपको अंडरस्टैंड किया जा रहा है एज ए कस्टमर, आप किसी को एज ए अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं एज ए कस्टमर. सो द रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस डिसीजन मेकर्स, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स एंड द कस्टमर्स हैज बीन इम्प्रूव्ड. देयर प्रेफरेंसेस आर नोन टू द पीपल. पीपल की चॉइस क्या है, कस्टमर की चॉइस क्या है, दैट इज मच मोर बेटर एनालाइज्ड एंड बीन पुट इन टू द विजुअल फॉर्म
for the decision makers so that they can automate, they can include all the necessary changes so that next time जब आप लॉग इन करते हैं, नेक्स्ट टाइम आप वहाँ जाते हैं तो आपको वो चेंजेस विजिबली दिखाई देते हैं. तो दिस एंड अगेन दिस अगेन रीट्रेट टू द नंबर प्रोसेस टू हेल्प टू इंप्रूव द प्रोसेस इंप्रूव होगा आपका. क्यों? क्योंकि भाई अगर नेक्स्ट टाइम आपको मेहनत कम लग रही है ढूंढने में कोई चीज़ जब जाके, तो नेचुरली इट हैज़ इंक्रीज दी process capability. So these are the importance which I have visually put in the form of this, necessary for optimization, very important. Relationship with customers से improve होगा, mapping companies performance, understanding the market. So these are the things. Now coming into very important thing कि जब हमें समझ में आ गया है कि importance of data बहुत ज़्यादा है, तो data को हमें उठा के storage में डालना है. कह देने से data नहीं आ जाएगा. So what is the process? This process is called as the data acquisition system. Data acquisition system, DAQ. This has a well defined methodology which has to be taken care. देखिए इसमें broadly देखेंगे तो 4 पार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है. इस 4 पार्ट को अगर हम एक फिगर से देखें तो आपको समझ में आएगा. See, we start with a physical system. We say there is a light which is there, red light है, एक लाइट है. अब वो लाइट जो है, अब वो रेड लाइट से जो इंफॉर्मेशन है उसको उठा के हमें कंप्यूटर में डालना है. अब वो रेड लाइट से जो इंफॉर्मेशन है उसको उठा के कंप्यूटर में डालना है. दिस आर द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन, दिस आर द थिंग. ये कंप्यूटर है आपका, ये रेड लाइट है, यहाँ से उठ के यहाँ के थ्रू आना है. तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए इसमें बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं जो समझ में आ रही हैं. पहला तो कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी. सेकंड चीज़ है कि जहाँ से चल रहा है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी. प्लस इन दोनों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंप्यूटर ऑलवेज एक्सपेक्ट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल फॉर्मेट, दैट इज नथिंग बट दी 0 and 1 format. And if you are interacting with the system from where the data is coming and it is not in a digital format, then you need to convert into digital format which we have shown here as a analog to digital converter. इसके बीच में क्या क्या चीज़ हो सकती है? इसके बीच में जो चीज़ें आती हैं, they are been broadly classified into sensors, transducers and actuators. Now तीनों का क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? सेंसर आपने कई बार सुना होगा. आज की डेट में जब हम लोग इस टर्म को यूज़ करते हैं तो हम लोग बहुत प्रीडोमिनेंटली बात करते हैं सेंसर्स की. वाई? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द हार्डवेयर में कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल बॉयलर ले लीजिए, किसी भाई कहीं जगह पे कोई चीज़ बॉयल हो रही है, उसका टेम्परेचर रेज हो रहा होगा. अब वो बॉयल जिसके अंदर हो रही है, इमेजिन करिए ना, घर में भी अगर आप कोई चीज़ पकाते हैं तो उसकी बॉइलिंग का भी एक टेम्परेचर होता है. उसके बाद आप उसको चलने नहीं देते हैं. कोई चीज़ चालू किया आपने बॉईल करनी, पानी गर्म कर रहे हैं तो एक टाइम तक ही तो गर्म करते हैं, उसके बाद ये नहीं है कि इनडेफिनेट तक भूल गए और चले गए. देन यू नो व्हाट विल हैपन. सो उसका एक टेम्परेचर का एक रेंज है जिसके बाद वो बॉईल होना शुरू होता है और उसके बाद आप एक लिमिट में आप समझते हैं कि भाई इससे ज़्यादा आपको नहीं करने देना है. ये इंसान है जो समझ रहा है. वाइल इन द केस ऑफ मशीन you need a certain marking schemes, you need a certain device which can sense for you कि अब टेम्परेचर 0 डिग्री है, अब टेम्परेचर 37 डिग्री हो गया, अब टेम्परेचर 100 डिग्री चला गया. तो ये टेम्परेचर की जो बात कर रहे हैं हम, ये डिग्री कैसे पता चलती है? सेंसर सेंस करता रहता है. See, we are not going to deal here with the human intervention. This is the whole automated system which will come into picture here. ये पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है. इस ऑटोमेटेड सिस्टम को चलाने के लिए इट्स वेरी एसेंशियल दैट वी शुड हैव द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज अ सेंसर. नाउ व्हाट इज अ सेंसर एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर? सी, ट्रांसड्यूसर का सिंपल एग्जांपल है, जैसे अब ये है कि जैसे लाउड स्पीकर है. अब लाउड स्पीकर पे सिग्नल्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल, एंड दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू साउंड. सिमिलरली माइक्रोफोन देखिए, माइक्रोफोन पे आप बोलते हैं और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल बन जाते हैं. सो दिस आर ऑल ट्रांसड्यूसर्स विच आर कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. व्हेन दे कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन हो रहा है. पानी है, पानी बॉयल हो रहा है. पानी बॉयल होने के बाद उसको कहाँ जाके रोकना है या कितना टेम्परेचर दिखा रहा है, वो कहाँ कट ऑफ लिमिट देनी है, कहाँ लेस लिमिट है उसकी. फॉर एग्जांपल वोल्ट मीटर भी है, उसी तरह से टेम्परेचर आप मार्क करते हैं, कहीं बार मेजर करते हैं. दिस आर द अगेन ए काइंड ऑफ ट्रांसड्यूसर. सेंसर्स आर अगेन ए काइंड ऑफ ट्रांसड्यूसर. द ओनली डिफरेंस इज दैट दे आर हैविंग सर्टन पैरामीटर्स विच सेज दिस इज द highest limit, this is the lowest limit, this is the parameters on the basis of which it is being evaluated. Sensor sense करता है, ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर. सो यू विल से कि ये क्या है और आगे कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं. सी, दिस आर द थिंग्स
ये फिजिकल सिस्टम जिसकी हमने बात की थी यहाँ पे, दिस आर द फिजिकल सिस्टम जिसकी हमने बात की थी. दिस फिजिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ योर सिग्नल्स, ऑन ऑफ स्विच, टेम्परेचर, फोर्स, लाइट, pressure, these are the things which comes. So when we talk about the sensor, these are the sensors which I have talked. बहुत सारे सेंसर, अलग अलग ऑप्टिकल सेंसर, थर्मल सेंसर्स, मैकेनिकल सेंसर्स, केमिकल सेंसर्स, अदर सेंसर्स, इलेक्ट्रिकल सेंसर्स. आई हैव डिस्कस अबाउट 2-3 सेंसर्स हियर. वोल्ट मीटर के बारे में मैंने अभी डिस्कस भी किया था, इलेक्ट्रिकल के अंदर आता है. ओम मीटर है, उसको भी आप यूज़ करते हैं. थर्मोमीटर है. So there are various type of sensors. The important thing to understand is that what is actually is a sensor. Sensor is nothing but a kind of transducer only, which is able to have a detect the presence of certain kind of energies into that. So what are the transducer? Transducer, we have already spoken about the transducer through the various example like this we have already discussed. So these are the transducers which convert one form of energy into second form of energy. Now how they are different from sensors and transducers are different from the actuators. The difference only broadly lies in the way that when you say one form of energy is there, it is being converted to another form of energy, or one form of energy is there, we require to get it transmitted from one place, one signal to another, or one place to another, which require its motion, You see this one, you will come to know that this are the things. If you see this we require it to move, If you want it to move, then very important aspect is that it should be able to move. So actuator help in movement of it. So how do we categorize the actuators? They are mechanical actuators, electrical actuators, and the thermal actuator, depending upon our usage from where we are collecting the data. Data may be used by the business in every aspect. So the wider the aspect is, wider the data collection is, wider you will find the mechanical, electrical and the thermal actuators, because that depends upon the data from where you are taking it. May be mechanical source, it may be an electrical source, it may be a thermal source. So these are the things which are there, which help us to go for this. So summarizing this our discussion, what we come to know is, when we talk about the importance of the data, it is very understandable aspect that in wider perspective collection of the data is very important, because once the data is there, we will be able to improve our process, we will be able to give satisfaction to the customers, we will be able to provide a better insight into it through the visual aspects. Then comes under, if we understand the importance of the this data, then we need to acquire that data, or we need to gather that data, या हमें कलेक्ट करना है डेटा को. कलेक्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है. तो ब्रॉडली वी हैव क्लासिफाइड दैट वी रिक्वायर सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स, actuators, analog to digital converters, which can be of varied form, because the data is in its varied form, and ultimately it has to be stored in the form of digital 0 and 1. So that is all for today's lecture. In our session we have discussed the importance of the data. Thank you very much.